देखिले से फर्स्ट से तीनटा चैप्टर देखिले ना देखिले ओके ठीक अछि हम गोटे काम करिया से फर्स्ट तीनटा चैप्टर टिके टिके ब्रीफली डिस्कस कर दो तो सिलेबस रो फर्स्ट जो तीनटा चैप्टर रहिला गोटे होछ हम स्टडी ऑफ फूड्स स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड्स स्टडी ऑफ फूड्स में रेफरेंस कौन रखछन मटेरियल्स कौन अंकित आपण कौन रखछन स्टडी ऑफ फूड जो सर आरटी प्लस रो थिला हां आ गुटे मोबाइल सर गुटे नोट्स थिला यार आरोहन रो गुटे किनथिली सर हां आरोहन हां सेति की पड़ी आ किछ ठीक अछि सेटा भी देखि परिबे इवन जो हम प्रेमलता मल्लिक रे भी अछि ना ताकू भी टिके माने गोटे थोर देखि परिबे से भी ना चैप्टर 1 टा ठीक देछि तो जदि आप देखिबे जदि गोटे थोर टिके देखि दब ओवरव्यू सेमति भी चैप्टर 1 टा टिके बोरिंग लगे चैप्टर 2 टा बेटर दे पारे बिकॉज़ हम जे कोन जगह हम जदि सर्च करिया इन जनरल तो हमको कोन मिले हमको सेही जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट सेही बेसिस रे हमको कंटेंट्स अधिक मिले रादर देन कि सीरियल्स किबा जो हमें मिल्क प्रोडक्ट्स को जे मीट कथा को जे ए कैटेगराइजेशन रे टिक कम मिले हमको मटेरियल्स ओके तो सेटा टिके प्रॉब्लम हे जे अदर देन दैट पेपर माने चैप्टर 2 onwards you won't be feeling any problem see एटा होछ हम चैप्टर 1 जो रहिला हमरो फर्स्ट जो चैप्टर टा दैट इज कॉल्ड योर स्टडी ऑफ फूड्स रे कोन अछि इंपोर्टेंस कंपोजिशन न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ सीरियल पल्सेस वेजिटेबल फ्रूट्स फ्लेसी फूड्स अंडर रे आपन को जो हमें मीट फिश पोल्ट्री एग्स से सब कहूछु और मिल्क प्रोडक्ट और फाइनली फैट्स एंड ऑयल्स माने डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल कोन होबो माने जदी रूम टेंपरेचर रे सेटा जदी सॉलिड फॉर्म रे अछि देन ताको हम फैट्स कहूछु और जदी सही जिंस रूम टेंपरेचर रे लिक्विड फॉर्म रे अछि ताको हम ऑयल कहूछु बटर कोटे फैट हैला बट ऑयल जो हम यूज कहूछु रिफाइंड ऑयल बा मस्टर्ड ऑयल इट इज कम्स अंडर द ऑयल द डिफरेंस बिट द ऑयल माने रूम टेंपरेचर रे बटर टा गोटे हार्ड स्टेट रे थाउची किंतु ऑयल टा लिक्विड स्टेट रे थाउची ओके सो वन एंड द सेम ही जिंस तारो ताको जेतबे हमें फर्दर जेतबे हमें स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स पढिबा इट विल बी अंडर द हेडिंग ऑफ लाइक हम जेतबे जो फैट्स हेडिंग अंडर ताको हम पढिबा ठीक अछि तो ए जिंस सीरियल्स कथा देइ छै सीरियल्स कोन ही परिबो डिफरेंट टाइप ऑफ सीरियल्स जंति कि राइस होची व्हीट होची इवन योर मेज होची ओके जो कॉर्न कहूचे एंड अदर देन दैट जो हमर मिलेट्स गुडा कहले ओके से गुडा को सब आपनकर सीरियल्स कैटेगरी रे आछंती तारो इंपोर्टेंस कोन ऑब्वियसली सीरियल्स रो इंपोर्टेंस कोन थाय जेमते में पल्स रो इंपोर्टेंस मेन पल्स जेतोला हम डाली कथा जेतोला कहूछु फर्स्ट जिंस दिमाग रास हम छोट छोट पड़ी माने सुनी आसु एटा गोटे प्रोटीन रो पार्ट तो मेन पार्ट होची तारो प्रोटीन कॉम्प्लीमेंट करूची ओके किंतु सीरियल्स कथा जेतोला कहूछु राइस ता हमें काहे की कंज्यूम करछु मोस्टली फॉर द एनर्जी रिक्वायरमेंट पाई गेटिंग मी तो सेही जिंसटा को हमको ध्यान रखिया को पड़िबो इट इज रिटन ओवर हियर ए जे देखिबे आपण तो सीरियल्स जनरली कार्बोहाइड्रेट किबा स्टार्च थाए हमें सीरियल्स प्रिंसिपल सीरियल्स कहा कहूछु राइस हला व्हीट हला मेज जवार रागी बाजरा ए गुडा को सब मिलेट्स कैटेगरी रे आछंती जति गोटे एग्जांपल देखुचे हमें जेमति कि गोटे सीरियल हला दैट इज द मेन सोर्स ऑफ योर एनर्जी जति राइस रो एग्जांपल नेकी देखुचे तो राइस जति इफ यू आर कंज्यूमिंग 100 ग्राम राइस देन व्हाट यू आर गेटिंग 345 कैलोरीज माने एनर्जी मिलुची 6.8 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स मिलुची पर 100 ग्राम मो जोटा कहली पर 100 ग्राम कंजम्पशन कले केवल 6.8 ग्राम प्रोटीन मिलेला बेलू 345 कैलोरीज हमको एनर्जी मिलुची तो आपको एनर्जी रिच प्रोडक्ट्स कोचे ताको एनर्जी पाई ही हमें कंज्यूम करछु सिमिलरली व्हीट पाई मध्ये तार डिफरेंट माने न्यूमेरिक वैल्यूज अछि तो एवरीथिंग वी शुड नॉट रिमेंबर जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थिबा दरकार ओके if it is asked in your examination either गोटे एटलीस्ट गोटे डायग्राम टे आपण मन रखिथिबे जेमति राइस हला तो राइस रो तार गोटे आउटर कवरिंग रहिबो देन ता भितरे आ गोटे कवर रहिबो तो गोटे इनर पोर्शन रहिबो ओके आ गोटे एम्ब्रियो रहिबो तो एम्ब्रियो टा देखो दिस वन इज द एम्ब्रियो देन देयर इज अ एंडोस्पर्म एलुरियंस कहउचंती गोटे
this intestine all it is not required ए सब जिंस एते मन रखिया दरकार नै आ गोटे पेरिकैप रहउची पेरिकैप माने बाहर माने यू कैन सी दिस इज अ पेरिकैप ए जो ब्लैक कलर गोटे पॉइंट अछि that is called पेरिकैप एते इजीली मन देखिए बनी बट ट्राई टू सी दिस if you see there is a black color गोटे outer cover अछि ओके ताको हम पेरिकैप कहउछु एलुरियन ता तळर ता नेक्स्ट लेवल ता जो अछि that is called एलुरियन ओके तापरे एंडोस्पर्म ता होची मझी पोर्शन ता दिस इज योर एंडोस्पर्म ओके आ फाइनली जो गोटे एम्ब्रियो थाउची जति इन केस बिकॉज इट्स ए एटा रिप्रोडक्शन पई से माने यूज करछ हम तो कंज्यूम करछु दैट इज डिफरेंट थिंग ओके सो इट इज योर एम्ब्रियो ए जो पार्ट दिस इज योर एम्ब्रियो तो गोटे डायग्राम एटलीस्ट मन रखिथिबे इफ इट इज बीइंग आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन यू शुड बी एबल टू ड्रॉ दिस तापर रहिला न्यूट्रिटिव वैल्यूज गुडाक न्यूट्रिटिव वैल्यूज तो ऑब्वियसली बहुत गुडे अछि न्यूट्रिटिव वैल्यू नॉट ऑल एटलीस्ट चारि पांचटा न्यूट्रिटिव वैल्यू आपन को मन रखिया पड़िबो टिके डिफिकल्ट मन रखिया पई बिकॉज़ बहुत गुडे न्यूमेरिक्स आसुची बट यू शुड माने को टिके मिनिमाइज करतेबे जदी गोटे अलगा पेपर रे लिखि देबे सपोज बाजरा पे अपन लिखिले ओके तो बाजरा पे सब जिंस लिखिया दरकार नहीं एटलीस्ट प्रोटीन टा फैट टा कार्बोहाइड्रेट टा एनर्जी at least if this much you are writing and at least gote dita vitamins proteins ko you can add iron you can add suppose vitamin C so like that माने चारि पांचटा कंपोनेंट को आपण लिखिबे आ you should remember not all जेमति गोटे बाजरा नहीं गले गोटे मिलेट्स नहीं गले ज्वार नहीं गले राइस रो किछि रखि दियंतु व्हीट रो रखि देबे जेमति होल व्हीट हला ओके राइस रागी हला किबा राइस रो डिफरेंट राइस टाइप्स अछि गोटे ही राइस नहीं जानतो इट विल बी सफिशिएंट बहुत माइनर सपोज राइस फ्लेक्स सपोर्ट अपन नहीं गले ओके दैट विल बी सफिशिएंट ओके तो ए गोटे ए जो मु कहली चारि पांचटा टाइप ऑफ फूड रहिला से चारि पांचटा टाइप ऑफ फूड रो एक माने कंपोनेंट्स गुडा तार खाली मन रखिया पड़िबो आपन को दिस द ओनली हेक्टिक पार्ट फ्रॉम द चैप्टर 1 ओके तो कंपोजिशंस कोन अछि जदि सीरियल्स रो कंपोजिशंस देखिबा हमें डिफरेंट टाइप ऑफ सीरियल्स जोटा देखिले जेमति कि राइस हला व्हीट मेज होल माने बार्ले हला ओट्स राई ए सब गुडा कर कंपोजिशंस कोन तार कैल्शियम प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट देन सॉरी कैल्शियम कोनतली कैलोरीज देन कैल्शियम आयरन डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स कोन विटामिन ए विटामिन B1 vitamin riboflavin होची देन niacin होची ये सब होची विटामिन बी यू कैन क्लब इट एंड विटामिन बी अंडर रे अपन क्लब करि परिबे देन विटामिन सी तो विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी आयरन को कंज्यूम करछु कैल्शियम को कंसीडर करछु अदर देन दैट माने हमरो रहिला कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट ओके तो ए केतरा जिंस ही अपन को मन रखिया को पड़िबो देन जेमति हम पढ़ले राइस कथा सेमति व्हीट इज देयर राइस पे बिसरा में डिटेल पढुछु ओके तो ब्रेकफास्ट मील एंड ऑल दिस इज नॉट रिक्वायर्ड ओके डिफरेंट कुकिंग स्टाइल से सब भी हमको पचारेनी हमको केवल एतिकी ही मन रखिया पड़िबो दिस इज योर व्हाट इज कॉल्ड ए सीरियल पार्ट ओके तो हमको पचारि छि ही तीनटा जिंस कोटे होची इंपोर्टेंस देन देयर इज ए कंपोजिशन एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू सब तो डिस्कस करी हम पे पॉसिबल नहीं आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया कि को सोर्स रो आपण पढ़ी पारिबे ओके जेमति संकेत पे कहउथिले कि सेट आपण जो हमरो आरटी प्लस भी मटेरियल्स अछि पीडीएफ्स अछि इफ यू आर नॉट हैविंग दैट देन हमें गोटे काम करिया गोटे ग्रुप कर देबा व्हाट्सएप रो सेठी जो भी इंपोर्टेंट मटेरियल्स गुडा अछि वी विल शेयर दोस मटेरियल्स so that you can better you will have the better exposure to the materials available okay तो आमे माने हमरो अप्रोच कोन अछि एना कि को टॉपिक्स रहिला ताको को वे रे आपण पढिबे सो दैट दिस प्रोसेस विल बी इजी फॉर यू ओके तो फूड साइंस रो ए ही जिंसो जेमति हमने सीरियल्स कथा पढले सेमति अन्य पार्ट्स गुडा कबी अछि दैट यू कैन गो थ्रू दिस एडी हला आपण को मिल्क रो अछि नाउ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ओके तो जेमति हमें सीरियल्स कथा कहथलु सीरियल इज ऑलवेज ए एनर्जी पई हमें माने थेरा गोटे टाइप रो कैलोरी कंजम्पशंस पई हमें यूज करूछु सेमति मिल्क को हमें कोन पई यूज करू मिल्क को गोटे हमें बैलेंस डाइट हिसाब रे यूज करू स्पेशली जो जेमति कैल्शियम रो गोटे मेजर सोर्स अछि किछि अमाउंट रे यू कैन गेट प्रोटीन मिल्क प्रोटीन जो रहिला
because see there are two type of protein. Okay, gote hochi there is a जो आमे कहूछु एनिमल प्रोटीन एंड प्लांट प्रोटीन. लास्ट क्लास रे भी कथा हम कहितली बोधे. तो एनिमल प्रोटीन रे एक्चुअली प्रोटीन रो जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कोन प्रोटीन कहा को नेकी प्रोटीन तयारी हेछि अमीनो एसिड. हां दिस इज अमीनो एसिड. ओके, तो अमीनो एसिड रो केतरा अमीनो एसिड एसेंशियल अछि केतरा नॉन एसेंशियल अछि. ओके, तो आमे कहूछु नोटा एसेंशियल अमीनो एसिड्स अछंती. So if we are consuming only plant product like a vegetarian, what will happen? कि all the amino acids we are not getting. Okay, तो बहुत गुडे deficiency diseases हे पारे. So to neglect that thing, to negate that one, what we have to do, we have to consume milk. Okay, to it is as a compensatory measure. If you are consuming animal protein, you are getting this all the 9 essential amino acid, but that is not true in the case of the plant proteins. Okay, तो सेठी पे हमें कहूछु मिल्क गोटे होची हाई सोर्स पर रिच सोर्स ऑफ ए प्रोटीन बिकॉज इट इज ए एनिमल प्रोडक्ट. तो जो तार जो प्रोटीन अछि तार डिफरेंट नेम अछि एमति कैसिन कहूचे हमें ताको अछि इवन जो कैल्शियम कंपोनेंट ता बहुत अधिक अछि. मिल्क रो डिफरेंट पार्ट्स अछि माने डिफरेंट सोर्स अछि जेमति कि ह्यूमन मिल्क रो अलगा कंपोजिशंस अछि. जो हमें काउ मिल्क कथा कहूछ दैट इज डिफरेंट, बफेलो मिल्क रो दैट इज डिफरेंट, गोट मिल्क रो डिफरेंट आसीबो. But by and large like human milk रो किछि particular because it's a thin man तार माने fat contains टिके कम थाए आ बहुत easily digestible. So that's why जे छोटो छुआ को काहे कि human milk consumptions पई माने recommend करा जाय because it's easily digestible for in terms of our own digestive system. Okay, तो that is what तारा again composition तारा importance कोन अछि तारा nutritive values कोन. Okay, so this is your nutritive values. Cooking procedure and all preservation procedure ये सब जिनसा हम पई दरकार नहीं. This is not in our book. Okay, आमो syllabus रे नहीं ये सब जिनसा. It is your composition. मु जेमति कहली सब जिनसा मन रखिया पॉसिबल हबन. You try to differentiate के ए जेमति source of milks कथा कहली buffalo milk कथा देछि, cow milk कथा, goat milk, human milk, then एते सब दरकार. This is enough. Okay, human milk रे देखिए गोटे ए पर्टिकुलर जिंसटा को you have to concentrate. If you see carbohydrate is maximum. Okay, or other comparison carbohydrate maximum था. That is the माने because energy provide करूची छोटो छुआं को. और फैट बहुत कम था. If you see fat is comparatively the least. Okay, it is 6.5 buffalo रे maximum था because बहुत मोटा खीरोटा अपन जानथिबे. Then cow milk, goat milk is over fat अच्छी adequately, but human milk it is less compared to others. So all the parameters you should not mug up. At least जेमति मु कहली protein, fat, carbohydrate, energy किछि भी गोटे कैल्शियम आयरन उठेले that's all. Then vitamin A, vitamin B, vitamin C ए सब जिंस केवल parameters गोटे अलगा पेपर रे लिखि दियंतु ताकू थरे दी थर रिवाइज करिवे and before going to the examination you should brush up once. Okay, then milk product. Milk रो जो भी माने प्रोडक्ट्स हमें चीज कथा कहूचे, बटर कथा कहूचे, अदर मिल्क प्रोडक्ट्स गुडा को कर्ड होची तार कंजम्पशंस रे कोन डिफरेंशिएशन आउची. ओके, जंती माने हमें चीज माने एबे कोनोसी मिल्क प्रोडक्ट जो खट्टा लागुचे हमको तो व्हाट विल हैपन बिकॉज़ ऑफ दैट प्रोसेसिंग जो ता ऊपर जो माने जो किछि प्रोसेसिंग हे जाउची ता फल रे किछि तारो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट डिक्रीज करे, अदर न्यूट्रिटिव कंपोनेंट इंक्रीज करे. जंती विटामिन सी इंक्रीज करे. Cheese is composed of your protein and the fat. Okay, so cheese रो energy yielding बहुत कम है. Okay, so it is an excellent source of हमें कैल्शियम कहूछु. Similarly butter generally fat पे हमें ताको यूज करूछु. तो प्रोटीन वगैरह तार एते यूजफुल कंपोनेंट नुह. तो जे कोनसी हमु जानिया कथा होची जेतले मिल्क को हमें प्रोसेस करके मिल्क प्रोडक्ट रे कन्वर्ट करूछु किछि कंपोनेंट तार डिक्रीज करे और किछि कंपोनेंट तार इंक्रीज कर जाए. ओके, तो ए गुडा को सब डिफरेंट टाइप ऑफ माने माने मिल्क हे पारे जेंति चीज कथा कहले, चीज बटर्स कथा कहले, ड्राइड मिल्क कथा कहूचे. ओके, ड्राइड मिल्क रो डिफरेंट पार्ट्स अछि जो माने मिल्क पाउडर्स वगैरह पे हम यूज करछु. ओके, तो दैट्स ऑल. देन कमिंग टू द पल्स एंड लेग्यूम्स. तो पल्स रो मेन यूसेज ता कोन जेतोळे हम पल्स कथा कहूछु जेमति राइस कथा कहले बा सीरियल कथा कहले इट वाज एनर्जी. Milk hochi for your minerals and you can say protein. तो pulses रो main काम कोन थिला? It is for the protein. Okay, so
जो पुअर मैन माने जो पुअर पर्सन्स अछंती तो आमर कोन जो डाइटरी इफ यू एनालाइज आवर कंजम्पशन पैटर्न देन generally we consume more cereals. Okay, when you are consuming more cereals you are deficient of your protein requirement. To compensate that what we are doing, we are consuming pulses. ଆଉ କିଛି amino acids ଅଛି जोटा कि राइस रे अधिक अछि ଆଉ पल्स रे नाही. ओके, सिमिलरली राइस रे किछि एमिनो एसिड नाही जो पल्स रे अधिक अछि. तो राइस और पल्स को खाइ एट ए टाइम कंज्यूम करिया फल रे कोन होछि गोटे कंबाइंड इफेक्ट पडुछि जोटा कि डेफिशिएंसी आउ सरप्लस पार्ट ना सेटा कंपनसेट हो जाउछि. फाइनली वी आर गेटिंग ए एडिक्वेट होलसम मिल्क और होलसम मील. ओके, सो दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ योर पल्स. तो पल्स जनरली गोटे इट्स ए फ्रूट सीड आमे कहूछु जोटा डिफरेंट टाइप रो हिपर जेमति कि माने बेंगल ग्राम कथा कहूछु, ब्लैक ग्राम्स कथा कहूचे, ग्रीन पीज होची, ए सब गुडा को पल्सेस कैटेगरी आछि. ता कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू, प्रिंसिपल्स ऑफ कुकिंग ए सब जिन हमको दरकार नहीं. This is your nutritive values. We have to remember certain things. जो भी जिन आपको ठीक लगे जैसे सोयाबीन, it is an important thing. You can remember this. Other than that, peas भी गोटे, but roasted peas not required. Okay, green peas, green whole, green gram whole, जोटा साइड को कौन रखी परिवे. Black grams दाल गोटे कौन रखी परिवे. Bengal grams, this you can remember. Okay. सर हाँ. सर आपण जो कहउछंती ए न्यूमेरिकल वैल्यू गुडा को मन रखिया पड़िबो ना टाइप्स ऑफ प्रोटीन जेम नहीं 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 न्यूमेरिकल वैल्यूज को मन रखिया पड़िबो नॉट ऑल. मु सब को मन रखिया कहूनी मु कोन कहूची ना सर जेमति कहउछंती कि माने प्रोटीन ने टाइप्स ऑफ प्रोटीन अछि. मेथियोनिन रे पुअर अछि, लाइसिन रे रिच अछि, से जो से ग्लोब्युलिन, एल्बुमिन ए सब गुडा लिखिया पड़े ना ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू. नहीं नहीं देखो सेटा तो अपन लिखिबे नॉर्मली बट सेटा ना अपन को न्यूट्रिटिव वैल्यू कंपोजिशन रो पार्ट हबो नहीं. सेटा अपन तार थ्योरी रे लिखुछन ना कि हमें काहे कि राइस अपन कंज्यूम करचंती माने राइस और दाल को मिसे की काहे कंज्यूम करचो. दैट इज द जस्टिफिकेशन फॉर दैट वन. बट व्हेन इट इज बीइंग आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन राइट डाउन द न्यूट्रिटिव वैल्यू देन अपन को वैल्यूज लिखा को पड़िबो. तो सेहि में मु कहू छी एमती देखिले तो बहुत डिफिकल्ट लागु छी मन रखिया पे बिकॉज़ सब किछि मन भी पॉसिबल. जस्ट पिक आउट सेही 4-5टा कैटेगराइजेशंस और तारो कोन कोन लिखि जेंति फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आउ गोटे दीटा मिनरल्स आउ दीटा विटामिन्स. दैट्स ऑल. ओके, आई गोटे क्वेश्चन. हां आई गोटे क्वेश्चन सर. जेमति क्वेश्चन आसे एग्जाम रे टाइप्स कंपोजिशन ऑफ सीरियल्स आसे कि कंपोजिशन ऑफ राइस आसीबो एग्जैक्टली माने राइस, व्हीट, ओट्स, बार्ली. नहीं 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 देखो जो क्वेश्चन जदी आसीबो अपन चैप्टर 1 रो जो सीरियल्स राइस पचरी बने अपन को सीरियल्स रो कंपोजिशन सीरियल रो डिफरेंट सीरियल्स रो जो सोर्स व्हाट सीरियल तेरे हमें लिखुछु राइस लिखुछु व्हीट लिखुछु पल्स सॉरी योर जो भी हम मिलेट्स लिखुछु सेगुडा को सब सीरियल रो पार्ट हिला. बट इन द क्वेश्चन दे विल बी आस्किंग एज अ सीरियल राइस विल पचरी बे नहीं से माने. ओके सर, थैंक यू. ठीक अछि. हां, तो सिमिलर मु जो जिनसटा कहली कि जो पेपर 1 सर मोर ओटे डाउट थला. हां रोहन पूछो सर. सर मु लेट जॉइन कली बट आपण डिस्कस करसन कि नहीं. बट एबे जो मिलेट मिशन चलची तो कैन वी एक्सपेक्ट करंट रिलेटेड हियर लाइक एक्सप्लेन द न्यूट्रिटिव वैल्यू कंपोजिशन ऑफ मिलेट्स माने एबे चलची मिलेट मिशन सहित पे निश्चय देखो सुनो आपण जो जिनसटा कहिले एग्जैक्टली दैट कैन बी आस्क्ड. ओके, सेटा किछि बड़ जिंसो नाही. तो जदी इन केस मिलेट्स पचारे तो व्हाट सपोज टू बी सपोज भाबंतु कि मिलेट मिशन विषय आपण मिलेट्स पय किछि एक्स्ट्रा पढी कि जाना. जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल. इफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड देन हाउ यू कैन राइट द सेम थिंग विद योर एक्जिस्टिंग नॉलेज. यू आर नॉट प्रिपेयर्ड. बर्तन सपोज आपण किछि एक्स्ट्रा पढी ना बर्तन एटी रे जानछे मिलेट्स फॉल्स अंडर द व्हिच कैटेगरी. एटा पल्स रे आछी ना सीरियल्स रे आछी ना को अंडर आछी. तो इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सीरियल्स. तो सीरियल्स विषय हमें जानछो. तो सीरियल्स रो जो भी इंट्रोडक्शन अछि सीरियल्स रो मेन कंजम्पशन हमें प्रोटीन पय करू माने एनर्जी याइल्डिंग पय करूछु. तो एक्सवाइजेड जिंस सेटा आपण जो भी अछि से एक्जेक्टली से जिंस लिख परिबे. जेतोले मु कहितली न्यूट्रिटिव वैल्यू मन रखिया पे से मु कहितली ना किछि सी माने किछि हमें मिलेट्स को मध्य मन रखिबा. किछि मिलेट्स रो न्यूट्रिटिव वैल्यू जेंति बाजरा कथा कहितली, ज्वार कथा कहितली, रागी कथा कहितली. तो मोस्टली दीज आर द मेन प्रिडोमिनेंट यू कैन मिलेट्स you can say तारो अपन न्यूट्रिटिव वैल्यू जानछन. यू कैन draw a table and you can write that those things. compositions विषय रे मध्य से गोटे दीटा हमें जानिचे
से जिनस आमे लेखिबा बिकॉज़ इट इज रिटन ओवर हियर कि तारा से ए जो देखु नांती एडी किछि अछि एमति कि एग्जैक्टली मिलेट तो किछि लेखिनी बट ओके इफ इट इज नॉट रिटन आल्सो नो इश्यूज बिकॉज़ आमे ऊपर तो लेखुछि ताको ता सहित तो जो भी जिनस आपण जानचंती कि सपोज ओडिसा रे आमे मिलेट मिशन को प्रमोट करूछु तो ताको को हिसाब रे आमे पेनिट्रेट करूछु जेमति कि आमे माने जो कहा का थ्रू रे आमे कुछ हम मैस्कट्स हमें करिछु यूएन डिक्लेयर करिछि मिलेट्स को हमें पीडीएस रे भी ऐड करे को बर्तमान ट्राई करूछु तो ऑल दोस इनिशिएटिव्स जोटा कि आपण जीएस से जानछन दैट आल्सो यू कैन राइट ओके बिकॉज़ इफ इट इज बीइंग इफ इट विल बी आस्क्ड फॉर a 10 or 20 mark maximum which is your yes sir clear ठीक अछि तो चैप्टर 1 टा ही टिके माने मते भी सब टीडीएस लागे जस्ट बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ न्यूमेरिक्स टू रिमेंबर बट okay it is the part of our syllabus we have to go through that तो एग्जैक्टली जेमते हम पढ़ले सेमती मीट कथा भी हम देखिया मीट हो पोल्ट्री हो किबा फिश कथा कहूचे तो एग्जैक्टली जेतोले मीट पोल्ट्री फिश एसु कथा पडुची फास्ट एंड फॉरमोस्ट जिंस कोन आछे एटा गोटे को जिंस कंजम्पशंस करे इट इज मोस्टली टुवर्ड्स प्रोटीन कंजम्पशंस प्रोटीन सहित आउ किछि एलाइड मिनरल्स और विटामिन्स हमकु मिलुची बट मोस्टली इट इज ए प्रोटीन सोर्स बिकॉज़ हम प्रोटीन सोर्स ऑलरेडी डिस्कस करथिले द बिल्डिंग ब्लॉक्स आर एमिनो एसिड और एमिनो एसिड रो जो मेन पार्ट ता रहिला माने जो 9 essential amino acids रहिला that is all the 9 you can find in a माने animal protein but it is deficient in the plant protein so meat जदि हमें consume करछे बा eggs हमें consume करछे तो ए amino acid deficiency related कोनोसी disease हबो नाही ओके तो सिमिलरली जो भी हमको पार्ट्स अछि that will remember जेमति meat विषय एडी केछि देछि poultry विषय देछि you will find better materials also I am just giving an example fish विषय अछि हमरो ओके तो वन बाय वन आई एम नॉट गोइंग बिकॉज़ एटा मु पढेली भी आपन किछि एक्स्ट्रा बुझा पड़िबो नाही फाइनली नट्स एंड ऑयल सीड्स जो कथा कहूचे ऑयल सीड्स कथा हमें कहूचे बा ऑयल आउ नट्स तो कहिनी हम सिलेबस रे हमको फैट्स कथा कहिछि तो फैट्स आउ ऑयल्स कथा कहूचे तो फैट और ऑयल ऑब्वियसली फैट कंजम्पशंस पई ही हमें यूज करछु एटा को जनरली हमें कंज्यूम करू ना एटा गोटे बाय प्रोडक्ट है ऑयल को कोन डेली हमें 5 ग्राम 10 ग्राम पिउचे थोड़ी तो in the it is being used in the cooking process okay तो हम माने से जो appetite का increase करिया पे it is being used okay different type of seeds अछि जेमते कि माने sunflower seeds कथा हमें देखुचे ground nuts कथा ही पारे okay this is sunflower mustard ground nuts not roasted छाड़ दियंतु okay then coconuts okay almond cashew nuts these are dry fruits हमें ताको फ्रूट्स हिसाब रे ही माने कंज्यूम करछु walnuts जो अखरोट्स कथा कहूचे तो एग्जैक्टली ए सब इंपोर्टेंट पार्ट रो यू कैन मेक ए स्मॉल टेबल एंड ट्राई टू रिमेंबर दैट देन फाइनल देयर इज ए फ्रूट बा वेजिटेबल्स जो कथा कहूचे फ्रूट वेजिटेबल्स को हमें कोन एनर्जी पाई बा प्रोटीन पाई कोन पाई हमें कंज्यूम करछु जनरली हमें छोटो सुनी आछछु कि एटा गोटे प्रोटेक्टिव फूड तो हम ज्वर हेला हमें ताको खाउछु बिकॉज़ विटामिन्स और मिनरल्स तो हमको अधिक दरकार थाए तो फ्रूट्स गुडा को जो हेले से माने जनरली कोनोसी एनर्जी एते प्रोवाइड करंतनी रादर विटामिन्स और मिनरल्स प्रोवाइड करन जोटा के प्रोटेक्टिव कैटेगरी रे आसे किछि फ्रूट्स अछंती जो गुडा नेचुरली स्वीट फ्रूट्स गुडा को से गुडा को किछि परिमाण रो इवन यू कैन एक्सपेक्ट सर्टेन एनर्जी आल्सो यू आर गेटिंग जेमति कि मैंगो हे गला मैंगो कंज्यूम करले हमको किछि एनर्जी मध्ये मिलुची बट द माने जो इंटेंशन टुवर्ड्स कंज्यूमिंग दैट फ्रूट इज नॉट टू yield एनी एनर्जी बट टू गेट जो अदर कंपोनेंट्स ऑफ मिनरल्स और विटामिन्स को ठीक अछि तो सही जिंस लिखा है दीज आर जनरली पुअर सोर्स ऑफ योर प्रोटीन एंड फैट तो किछि किछि जगह रे आपन को माने कैलोरीज मिल जाए एनर्जी मिल जाए जोटा हम आपन को कहितली ओके तो तार भी किछि सेमति हमको न्यूट्रिटिव वैल्यू मिल जिवो सुगर केते रहउची एस्कॉर्बिक एसिड केते रहउची टोटल एसिड्स केते रहउची वेजिटेबल्स भी सेमती वेजिटेबल्स रो डिफरेंट टाइप्स अछि जेमति कि मोस्टली हमें कहूछु गोटे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो ग्रीन पत्ता गुडा हमें कहूछु स्पिनच हो किबा अदर जो सागो टाइप रो जो जिंस हमें कंज्यूम करूछु तो ताहा कंटेंट्स कोन आयरन वगैरह जनरली से गुडा अधिक थाए विटामिन के मिल परिबो ओके कैरोटीनिन रो गोटे इंपोर्टेंट हां कैरोटीनिन राइबोफ्लोविन्स फ्लोरी माने फोलिक एसिड्स ए सब गुडा को मेन कंपोनेंट थाए तारो ताकू छाडला पर रूट्स एंड ट्यूबर्स जो कहूचे गाजर टाइप रो जिंस जो गुडा को ताकू हमें कंज्यूम करछु से गुडा को भी माने गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी थांती एंड अदर वेजिटेबल्स ब्रिंजल हला लेडी फिंगर्स हला ए सब गुडा को
that okra जो कहूचे ए सब जिंस मध्य हमें कंज्यूम करूछु इन दैट इज द थर्ड कैटेगरी ऑफ योर फ्रूट्स ओके तो ए सब जिंस हल्ला परे आ गोटे छोटो पार्ट कोन अछि इट इज रिटन इन माने एथे अछि ना नेक्स्ट अछि नो इट इज हियर तापर जो नेक्स्ट टाइम पढ़िया स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स सेठी हम गोटे जिंस आसीबो गोटे बेले बेले पचार दिए गोटे बैलेंस डाइट विच से पचारे आ फूड पिरामिड विषय इज नॉट एक्सप्लिसिटली रिटन बैलेंस डाइट कोन फूड पिरामिड कोन एनीवन कैन गिव एन माने आइडिया फूड पिरामिड कोन सर सर जो फूड पिरामिड टा जो आईसीएमआर गाइडलाइंस थोड़ा हेतला हां माने जोटा जेमती एडिक्वेटली माने ईट करिवो लिबरली मॉडरेटली हम्म। और लेस ईट करिवो जेमती ठीक तो माने आमे गोटे आईसीएमआर हम कोन करछि गोटे